मुझे एक बात Yes, sir. बताओ। यू वर वन पर्सन जिसको था कि मेरे को तो सब कुछ पता है, मतलब आई नो, मैं तो जाऊंगा, फोड़ूंगा और वापस आ जाऊंगा। Yes, sir. बट टेल मी couple of things and how your journey was. I think पहले भी somewhere you could took some advice from someone, some coaching from somewhere, and then you came to us. So how your journey, this entire journey has been till your recommendation? Sir, first of all, when I cleared my written examination, there was a hodgepodge in my mind that where should I go? Where should I find someone that could guide me? Hence, I joined an academy first for the training purpose only. But I was not that much clear with my goal that time. So I thought that it should be a good idea to reconsult myself with an coaching academy. Thereafter, I went to SSB Guide. I met you, sir, and sir, I would say that the best decision me and my father took for this my entire journey before being recommended was joining you as a mentor, sir. Basically, sir, what I really felt that the main part that helped me get recommended was getting my mind open widely to the different ideas rather than having preconceived ideas. You helped us to open ourselves, open our minds to a large variety of ideas that helped us out in my SSB, and hence I got recommended, sir. So, what I'm understanding from you, Dev, is that what you're saying कि भाई हमने कुछ सोच के आए थे और आपने तो Yes. उल्टा कर दिया, आपने तो मेहनत ही बड़ी कराई हमसे। हाँ, मतलब सर ऐसा हुआ कि पहले सोच के आए थे कि ये करना है, उसके बाद हमें पता चला कि बस ये नहीं करना, इसके आगे भी बहुत चीजें हैं, ऐसा हो गया। And you must be hating me during those days because I remember कि you were always very energetic और ये वो, and I यस सर। I gave you a I gave you an ulta advice. Do you यस recollect सर। that? क्या यस सर। क्या था मैंने? Sir, I still remember the very last day when you gave us reviews. You told me that you need to be calm. ऐसे ज्यादा उछलोगे, ज्यादा वो करोगे तो नजरों में आ जाओगे एंड इट्स नॉट अ गुड साइड। तो यू नीड टू बी काम ओवर देयर। बहुत आराम से मतलब अपने पॉइंट्स रखने हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि दूसरों को दबाकर, दूसरों के साथ मिलकर अपने पॉइंट्स देने हैं, आगे बढ़ना है और इस तरीके से अपने आपको रिप्रेजेंट करना है। और आपने कहा था अगर ये कर लोगे तो रेकमेंड हो जाओगे सर, एंड आई फॉलोड यू एंड आई गॉट रिकमेंडेड। I'm really very happy. So Rudransh, मैं तेरे को ना हमेशा I think I have always seen you very straight. Rudransh doesn't matter. So don't switch on your camera. I think we can have a conversation like this. I've Yes, sir. always seen you very serious, very straight face. Uh, how was your journey? You were preparing for some time, then you went to a different academy, and then you have Yes, appeared sir. earlier. Then you came to us. So could you see any changes in you yourself? Yes, sir. So, firstly, I prepared myself for the written examination from a different academy, and I took the SSB coaching also there. But what I felt was my GTO was not fully prepared from that academy. मेरे individual obstacles, say group obstacles and PGT and all, I was not fully prepared, and therefore I joined SSB Guide Defense Academy. And once I came here, I found out that not only my GTO is not fully prepared, but interview और site में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं. And I think that it was one of the best decisions that I made कि कोई और जगह से भी coaching I should take, because there were many things that I found about myself कि हाँ I'm mistaken here, मुझे ये नहीं करना चाहिए. Like in group discussion, I took very less participation when I was in the other academy. But once I joined this academy, group discussions में बहुत ज़्यादा practice हुई, and even you motivated me to कि बार बार बोल, and also the part where you said कि हर रोज एक वीडियो बनाकर भेजना, that I feel was very different from other academies, because not every mentor in every academy goes through this trouble कि हाँ हर रोज मेरे को वीडियो भेजो and I'll assess you every day. So I think sir that is what helped me fine tune myself कि ये छोटी छोटी गलतियां and I should work upon that. And even on the last day you told me कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, just follow your this routine, and I followed sir, and then हो गया. आज ना मेरे पास दो वॉयलेट एंड रेड हैं। एक को मुझे बोलना पड़ा शांत हो जा, दूसरे को मुझे बोलना पड़ा बोलना शुरू कर, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट, यू कांट हैव सेम टेम्पलेट फॉर एवरीबॉडी कि ये करोगे तो हो जाओगे, वो करोगे तो हो जाओगे। बट Yes sir. यस,
अनफॉर्चुनेटली उसके लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है, जो भी आपको मेंटोरशिप दे रहा है या जो भी आपको ट्रेन कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। अभी ईमानदारी से दोनों बताना, देव पहले तू बताना, रुद्रांश फिर तू बताना, कि मैं ना जबरदस्ती बोलता था कि मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, एंड तब तो बहुत गाली देते होगे, क्यों देव? सर तब तो मतलब ऐसा लगता था कि भाई रिटर्न के लिए भी इतना पढ़ा है, अब भी लिखना पड़ रहा है। इतने लंबे लंबे पेजेस, उसके बाद वीडियोस, मतलब वो कंटेंट इतनी जल्दी प्रिपेयर करना, फिर याद करना, फिर आपको भेजना, थोड़ा डर भी लगता था कि सर क्या रिमार्क्स देंगे। मतलब बट सर ये है कि फिर जब एसएसबी में लेक्चरेट वगैरह चल रहे थे ना, तो एक एक पॉइंट जब मुंह से सटैक सटैक निकल रहा था, तो सब चीजें याद आ रही थी कि हाँ ये कहा था समझे, ये सही क्लिक कर गया माइंड में। ये सबसे सही काम किया अभी। यार रुद्रांश, हाउ अबाउट यू? गाली तो दे रहे Uh, हो, पक्का कोई डाउट नहीं है, तो तुम यू आर बीइंग पोलाइट नाउ, चलो आई आई एक्सेप्ट दैट। यार रुद्रांश। सर रिटर्न में एक ये था कि देर वाज वन रोहन भैया ऑल्सो, यू माइट रिमेम्बर या रोहन गुडी भैया। या तो उनके साथ आई यूज टू सिट एंड वो भी लिखते होते थे, मैं भी लिखता होता, तो ही यूज टू से अलॉट कि क्या लिखना, बट आई रिमेम्बर कि नहीं, लिख लेते हैं, 15 दिन के लिए है, 15 दिन के लिए चलो काम करके जाते हैं, क्यों छोड़ना। बट आई थिंक वो सब लिखना हेल्प मी अलॉट इन दी एक्चुअल एसएसबी, क्योंकि काफी पॉइंट्स जो लिखे थे, जो हाथों से खुद लिखा होता है सर, वो ज्यादा याद रहता है। एट दैट टाइम वो जब लिख रहे थे तब वो चीज ध्यान में नहीं थी, तब तो था क्या इतना काम दे दिया। बट वंस आई वाज इन एसएसबी, तब हाँ कि ये लिखा था मैंने जीडी में, आई यूज दिस पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग में 28% इट कंट्रीब्यूट्स, ये लिखा था मैंने, तो दैट पॉइंट आई यूज्ड इन माय जीडी आल्सो। you still remember? यस सर। Good. and videos maybe also sir, first my first two videos I think were of 3 minutes or 2.5 minutes, बट उसमें भी आपने बोला कि लंबी करो, 4 मिनट्स तक लेकर जाओ। उससे सर व्हाट बेनिफिटेड वाज कि जब रियल एसएसबी में गए तब 3 मिनट्स तक बोलने का पूरा कंटेंट था। अगर इफ आई प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 3 मिनट्स तो फिर हो सकता था कुड हैव स्टॉप देयर एट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में मेरा कंटेंट खत्म हो जाता। लेकिन 4 मिनट तक जो आपने बोला कि नहीं, 4 मिनट 5 मिनट तक लेकर जाओ, तो दैट हेल्प कि 3 मिनट्स तक पूरा बोल पाया मैं वहां पे। It's human psychology. Even if I today want to speak on something, तो मैं कुछ ना कुछ तो भूलूंगा ही, अंडर प्रेशर, अंडर सेंस, प्लस आप इतने टास्क कर रहे हो, so obviously, but I am really happy। बट रुद्रांश, शुरू में तूने ये देव तो शुरू में टकाटक रोज रोज वीडियोस भेजता रहा, रुद्रांश ने शुरू में भेजने शुरू नहीं किया, बट रुद्रांश ने आफ्टर लीविंग द एकेडमी ही यूज्ड टू कीप सेंडिंग मी। हाँ, यस सर। उसके बाद में रुद्रांश के आते रहे मेरे पास, आई थिंक 15-20 तेरे एसएसबी तक यू यूज्ड टू कीप सेंडिंग इट रुद्रांश। इनफैक्ट देव आल्सो यूज्ड टू कीप सेंडिंग इट, बट फिर देव का स्पोरैडिक हो गया, उसको लगा अब तो चलो हो गया, सर ने एक्सीलेंट और गुड बोल दिया दो चार बारी, बट रुद्रांश यूज्ड टू कीप सेंडिंग इट। या नाइस। So those यस are the things I'm sure you're in your personal interview also, जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कौन आजकल थोड़ा पढ़ने, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है तो लोग पढ़ते भी नहीं है उसको, एंड इट मेक्स लॉट यस ऑफ, यू आर मोर वर्ल्डली वाइज, यू आर मोर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, you know everything, so that makes a lot of difference। So if there are a lot of people who are, you wanted to join, Rudrash wanted to join, but there's a lot of people who may or may not want to join the armed forces, but generally we propagate that everybody should appear in services selection board interview, for some reason. Our reasons are maybe different, yours may be different। Tell me one or two reasons, Dev, and then Rudransh, you, what do you think should be the reason for somebody, and if not at the cost of their studies, how can they balance out just preparing for the services selection board? Sir, can you please repeat it once again? I said, if there is somebody who doesn't want to join the armed forces, that's perfectly okay. But still, everybody should appear in the services selection हाँ board interview. What will be your reason to recommend somebody कि नहीं करना है इसको, और आपकी स्टडीज में इसको कैसे आप बैलेंस आउट कर सकते हो? दो क्वेश्चन। सर, आई थिंक कि एसएसबी इज एन टाइप ऑफ इंटरव्यू जो कि सिर्फ या तो नॉलेज ही टेस्ट नहीं करेगा, या फिर सिर्फ आपको फिजिकली टेस्ट नहीं करेगा। दे विल ओवरऑल असेस यू over your all the activities, all of your interests. So I think एक human being को जब मतलब anybody, a girl or a boy, whenever they appears for SSB, they get to know themselves better कि हाँ, I am better in this particular point, I am better in public speaking, I am better in personal one-on-one interviews, I am better in group handling। क्योंकि सर SSB helps you out in all aspects that you will face in your life। So even if you don't want to join army, you should
at least once, if you are able to, you should appear for SSB, because उससे आपको पता चलेगा कि in my life aspects मैं अपने जीवन के मूल्यों पे कितना खरा उतर सकता हूँ. So I think this is the very one reason that why everyone should appear for SSB. Moreover, sir, SSB requires you to be generally more aware about your surroundings, to be self-aware about yourself. So ये सब normal studies के साथ continue कर सकते हैं. What you mean is कि it is not during the SSB, but because of the preparation process is such that you will start, self-awareness and Yes, yes. self-assessment. It starts. Yeah, Once, you yes, sir. tell me. यस सर. सर व्हाट आई फील कि अगर किसी को नहीं भी ज्वाइन करना, दे डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू अपीयर फॉर एसएसबी सर, बिकॉज एज देव सेड कि प्रेपरेशन जो है दैट builds a personality for the person. As SSB is not only about your physicality, कि आप how strong you are or how mentally tough you are, it is about your whole personality. So for once a person starts preparing for it, he develops personality, and not only for SSB, for future interviews, for even corporate jobs or any other job as per se, and not even for job. A person should hold a great personality. What I feel, a gentleman should have a great personality in life. So sir, I think कि SSB की तैयारी करते वक्त you build a personality and you also get to know about yourself more, कि हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ, I like doing this. मेरी एज देव सेड पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, या फिर मैं फिजिकली ज्यादा अच्छा हूँ, आई शुड वर्क अपॉन. वीकनेसेस ज्यादा पता चलती है एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ्स, बिकॉज हर ऑलमोस्ट हर बंदे को स्ट्रेंथ तो अपनी पता ही होती है, बट वीकनेसेस नोबडी केयर्स टू डिफाइन देम. For SSB, every person refines their weaknesses. So I think that will help each and every person. And moreover, sir, studies and SSB को balance करना, sir, I think कि one should give out at least hour or 2 hours a day to prepare for SSB, because it is about analyzing yourself, and it is more enjoyable also. पूरा दिन आप पढ़ रहे हो साथ में अगर आप थोड़ी SSB के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो योर माइंड इज रिलैक्स्ड, बिकॉज आप खुद को और जानने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर लर्निंग मोर अबाउट योर सराउंडिंग्स, जीके अवेयरनेस, कहाँ कौन से वर्ल्ड में कौन सी जगह पर क्या चल रहा है. So I think that it refreshes your mind, as well as it also helps contribute to your personality. What you mean is that one should not wait for the written result or date ka. One should start early so that you can stagger your time. You don't have to like completely ये सब छोड़ के एसएसबी की तैयारी में लग जाना, because that is one apprehension everybody has. तो अगर आप Yes, जल्दी sir. शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे करके अपने वो जो पहले सेल्फ अवेयर हो सकते हो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अडैप्ट कर सकते हो, and then finally you'll be able to do it. So that's a very valid point which both of you brought out. It's not last में बोलता है चल यार अब तो हो ही जाएगा, but everybody may not be able to, and probably both of you could do it. I'll say one of the major reasons was because you had some prior knowledge of how to go about things. हाँ, थोड़ा सा अनलर्न करने में और उसको रीलर्न करने में टाइम लगा, but then Yes, that must have really helped you. yes, sir. Chalo, great, both of you. So now the next step is obviously wearing those KDs, and so you don't have to be, hopefully we'll meet in NDA once I come there and choose the Yes, sir. right squadron. So if you have to, when I say choose the right squadron, at the same breath, I'll say that you chose someone and then you chose us. I always say that choose any kind of mentorship. Everybody is good. Everybody is more uniform at some point of time. Most of the academies being run today. But what will be your two criteria, Rudransh, and then I'll come to you, Dev. How a person should identify the right mentorship program and go, because India geographic locations are such, everybody may not be able to, attend a particular program in some region of the country. Yes, sir. But if they have to select someone, what should be your 2-3 criteria, Rudransh? How should they go about it? Sir, firstly, the one major important criteria is कि आप सब कुछ कर रहे हो, you are preparing everything with all your might, but you won't know yourself कि आपने कितना prepare कर लिया है until you get assessed by a mentor. The major thing is कि you should take a mentorship where the mentor assesses you again and again, not only once, not twice, not thrice, but every day. As you also did कि videos बनाकर भेजो, I'll assess you every day.
So I think that is one of the major criteria which will help every person कि हाँ आज मैंने ये गलती की, कल मैंने ये करी थी, आज मैं इसको सुधार सकता हूँ. तो सर आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरियाज. एंड सर सेकंड शुड बी कि आप कोई ऐसी मेंटरशिप चूज करो जहाँ पर यू कैन गो अबाउट एवरीथिंग. आप जीटीओ के लिए भी प्रिपेयर कर सको. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर साइट. Because I have seen some academies that fully prepare you for interview. आपके इंटरव्यू के लिए आपको पूरी जान लगा देंगे, आपके साइट के लिए आपको पूरी जान लगा देंगे. बट फॉर सम पार्ट्स ऑफ जीटीओ दे विल गो अबाउट कि हाँ ये तो हो ही जाएगा. So I think you should not go for कि हो ही जाएगा. You should actually go and practice that yourself because some people might lack there. कुछ लोगों के लिए हो सकता है that they are very good in that. लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि that is the only part they lack. So I think that these two are the major criteria. How about you, Dev? According to you, what should be the major criteria? Sir, I think the major criteria, according to me, should be that how well I am being connected to teachers, how well I have been taught. मतलब मुझे कितने अच्छे से समझ पा रहा हूँ मैं teachers को. Because at the end of the day, the way you used to tell us things, वो अच्छे से एकदम दिमाग में set हो जाते थे. So this is something that a student should seek while thinking of a mentor for their future thoughts. Secondly, sir. Uh, एक होता है ना कि मतलब आई हैड एक्सपीरियंस टू कोचिंग अकेडमीज फॉर माई एसएसबीज एंड एंड आई हैव सीन दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग देम पुश लर्न कि हाँ आप इसी को याद करो एंड सेकेंडली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि हाँ आपको ये करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्री कंसीव्ड आइडियाज को अपने मन में भरो बट यू शुड बी ओपनड अप. आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि भाई मैं इस नजरिए से भी इन चीजों को देख सकता हूँ. This is also a very important thing that one should seek while preparing for SSB. सर ये मेजर दो पॉइंट्स है जो मेरे को लगता है कि while choosing your mentor should be noticed. Okay, couple of last questions. So in fact, we also conduct few online batches. So one of the online batches girl candidate who she got recommended day before yesterday. So there's always a discussion ki online karo, offline karo, online karo, offline karo. So if you have to choose, obviously देखो time permitting तो आप everybody says कि चलो offline कर लो तो आप physically ज़्यादा सीख सकते हो. But there are a lot of times जब time नहीं क्योंकि हम एक तरफ बोल रहे हैं कि जल्दी शुरू करो. तो 12th की पढ़ाई छोड़ के कोई 15 दिन छुट्टी लेके क्यों आएगा करने के लिए. So do you find any merit in an online training as well, Dev? Sir, I think it's totally it totally differs from person to person how well he can understand in offline and how well he can understand in online. For me, offline was a better option and things were suitable, so I went there. But if I went online, I know I would have learned the same things, and it might have happened that I must have learned them in a much different way. So there is no particular way that you should go for online or for offline. It's totally upon your mindset and totally upon your understanding of things that how well you can learn and understand things. How about you, Rudransh? Sir, what I have learned from my experience in different coaching academies is that uh, you cannot build up your personality in a 15-day boot camp. That is for sure. That 15-day boot camp is for refining yourself, for polishing yourself. Agar a person, as I said, a person should start preparing for his SSB way before his written examination. So I believe कि उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस इज अ मच बेटर ऑप्शन बिकॉज 12th की स्टडीज में यू शुडंट टेक एनी गैप कि हाँ चलो छोड़ के हम एसएसबी की तैयारी करने चले जाते हैं. एंड बीच में एवरी वंस इन अ वीक ट्वाइस अ वीक one should appear in online classes. But once your written examination is done, you have cleared your written examination, one should try and go for an offline batch 15 or 21 days if it suits to a person, because physically you learn a lot more rather than online. And that physical being there physically, it refines you more, and the assessor, the mentor, can assess you a lot better जब वो आपके सामने बैठा होता है. So what you mean is कि जब आप शुरू कर रहे हो तो you can get your एक जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन आपको मिल जाएगी in an online batch and you will be able to self assess and carry out assessment by the assessors
and then once you are through with your written exam, then you can come, because फिर आप जो learnings है उनको apply कर सकते हो on ground, Yes, sir. rather than thinking कि अच्छा ये ऐसे होगा और वैसे होगा. No, that Yes, sir. both of you, what you said makes a lot of sense. Thank you so much. One last message for people who are not able to take any kind of guidance from anyone, be it online, offline, for various reasons. What one guidance, what I think we've been discussing it quite a lot during your boot camp also, like Rudransh rightly brought out, and otherwise also we generally say, what is one piece of advice that you would like to give to those people who are not able to take any of these mentorship programs? Yeah, Dave, first you go ahead. Sir, I think a piece of advice could be the best awareness in this world is being self-aware. Once you are self-aware, your ways to different paths of knowledge opens up. So the very first step in the preparation of SSB should be being self-prepared. This is my piece of advice for those who could not afford or बड़ा could not बड़ा join. भ्रम ज्ञानी हो गया देव, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के तेरे मुंह से ये सर तब तो तेरी शक्ल पे ऐसा होता था, सर मुझे बोल रहे हैं कि कम बोल कम बोल कम बोल. सर नहीं सर, मतलब तब आपने मेरे को बताया था ना कि कम बोलना चाहिए, मतलब सर आई रियली फेल्ट दोस्त कि आपने मेरे को बताया था एक डायरी रखनी है और याद करना है कि मैंने कितनी जल्दी रिप्लाई किया, रुक के रिप्लाई करना, ये सब चीजें सर मतलब बहुत मायने रखती हैं सर वहां पे जाने के बाद एक I'm, एक चीज याद I'm, आती है. I'm glad that it helped. And what I can see is it was not only the SSB recommendation, otherwise in your life also you become more calm. Yes, Good. yes Yeah, sir. Rudransh, one advice Uh, you want to give to those people who are, who are not able to take these kind of guidance or mentorship programs. yes, sir. Sir, as my friend Dev here said, ki one should be self-aware. That is the most important. And as a fear, I totally agree with Dev here. Ki self-assessment should be there. But sir, what I also feel is that aside from your self-assessment, one should go about general knowledge, because that helps a lot in your SSB, general knowledge and your English speaking. A person should go about refining these two things. Self assessment also should one do, but these two things I believe are the core of what you should be doing, because if you do not know how to present yourself, अगर आपको पता नहीं कि आपको वहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, then it won't matter कि आपने कितना खुद को assess करा है, कितना खुद को आप refine करी जा रहे हो, अगर आपको you don't know how to present yourself. So I feel कि presentation of how you need to present yourself is the most important thing one should learn first. Recently, so this is a question to both of you. Rudransh, you go first. Recently, one of the candidates, or rather one of the officers, he told me, यार तू सारी वीडियो बना के डाल रहा है, तू तो सारे ट्रेड सीक्रेट दे रहा है अपने, कि असेस कैसे करो, ये कैसे करो, वो कैसे करो. So you are harming your own business. So Rudransh, is that correct? Sir, what I feel is कि making SSB coaching a business is not a very good idea. Good. As you are putting on videos on Instagram and YouTube कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, those trade secrets अगर आप नहीं डालोगे, someone else will. I feel कि everyone should contribute to the society, and I feel this is your way of contributing to a society, and it is a very good way, because कई लोग हैं who cannot afford SSB coachings, and they are very well worthy of being selected in the SSB also, if they have a bit of a guidance. And I think कि जो आप videos upload करते हो, they guide them कि हाँ मेरे को इस direction में जाना चाहिए, and I think that ultimately helps them in the SSB, and we obviously then get our future leaders. रुद्रांश, बस से आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग. मैं कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं डालता. मैं सिर्फ ट्रेड सीक्रेट डाल रहा हूँ, मैं एसएसबी का ट्रेड सीक्रेट नहीं डाल रहा. मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का ट्रेड सीक्रेट डाल रहा हूँ, कि अपने आप को कैसे, लाइक यू राइटली सेड इनिशियली, कि खुद को कैसे सेल्फ अवेयर, मतलब सो माय ऑल वीडियोस आर इंक्लाइन हाउ कैन यू बी अ बेटर पर्सन टुमारो. सी दैट इज व्हाई वी Yes, sir. लर्न टू लर्न, because we want to be better tomorrow. I don't want to be like an animal की पूरा 2 दिन खाया पिया बैठा, वही सब कार्रवाई की और learn to survive. I have already learned to survive. डार्विन ने प्रूव कर दिया है. Now we need to go Yes, sir. beyond that. Yeah, Dev, how about you? So am I doing the right thing, or is it that it may not, in the long run, it may not help only? Sir, I think it's definitely the perfect thing that could have occurred. Sir, uh, we as an aspirant are very much confused because internet is a very vast space, sir. We all are very much confused with the contents. But
So a person seeking help from your content would really get help, because not in terms of just SSB, but being a better person, being a better personality in life, in society, in culture as well. That your motto L to L, I still remember that: learn to live to learn. So life is an endless journey, sir, where you have unlimited opportunities to learn something new every day. So this should be unlocked. And sir, your videos tells us that how we can unlock this criteria of our life, learning. So I think, sir, it's a really good thing that you do, sir. Even I suggest my multiple friends following you for videos and all these Thank things, you, sir. thank you, thank you so much, Dev, and thank you so much, Rudransh. You both have been amazing. Heartiest congratulations again, and I just hope वो 3 साल तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 3 साल ऐसे भाग जाएंगे और उसके बाद you'll be 4 साल whichever academy you go, and then you'll be putting on stars or stripes, and then you'll again I'll get a call from some field area somewhere कि सर बचाना मैं यहाँ पे हूँ Yes, अभी sir. पोस्टेड कब आ रहे हो आप मिलने के लिए तो ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड टेक केयर कन्वे माय कांग्रेचुलेशंस टू Thank you, योर sir. पेरेंट्स एज वेल Thank you, sir. थैंक्स Thank you, sir. Thank you, sir.